morning to all of you. Namaskar, Sadar Pranam. And it is indeed a privilege for me to be coming along with Team HRD from MTI to start this important outreach initiative that we have named MTI Aapke Dwar. The whole idea behind this initiative is address the issues that have come up in the sphere of primarily L&D, which is the basic mandate of MTI, in the wake of changing times and emerging technologies. Since digital transformation happens to be one of the key areas and key issue that needs to be factored in while making any new L&D strategy, we have kept that in the fore. So, with that background, once again, Namaskar to all respected EDs, senior officers, and my friends and colleagues in the drive towards digital transformation, what we call geeks, the millennials, and the X-Factor leaders. So, let me start with the primary focus of this 1.5 day workshop. So the primary focus would be like this is the primary focus area. Prepare Team Durgapur Steel Plant for World Economic Forum's Global Lighthouse Network membership. That is one, and that you are seeing at the foremost. The second most important issue, and that I have dwelt already, is reformulating our L&D policy in the wake of changing times and emerging technologies. The third issue, which of course is very, very important and is one way or other related with point number one, because these people, these World Economic Forum people, when they come up to your respective location for evaluating you as a manufacturing site, they also look into the fact that whether you are a net zero and address these ESG issues in a proper manner. And the underlying principle behind any transformation is this: think big, start small, and learn fast. Learn fast has a connotation towards failure also, because nowadays you should not be afraid of failures, because that fear, stops you from going for creative ideas and innovative ways. Fail fast, learn from the failures, start afresh, and get renewed in their approach and whatever you do at the present level. So, coming to this, the background that I have said, in this context, I will just like to let you know that most of the leading companies in the world are awarding failures. If you fail, they have a system where they try and understand that if the particular project which has been taken for a very, very productivity increasing, quality increasing, some sort of initiative which in one way or other will lead to bottom line improvement, they generally award it so that you continue your efforts and all the inventions and discoveries
have many failures in the background. So team, young team which is there, they are our partners in digital transformation. Don't be afraid of failures. The top management sitting over here realizes that and are there to support you in your endeavor. So this is the basic background. In this perspective setting session, I will just like to take you through the fundamental changes that have happened in this world. Basically, if you recollect our hunter-gatherer phase, where were we? We were like struggling to save ourselves from animals who are stronger, fitter, and more agile than us. And that is why we were hiding in caves and we were trying to mine primarily to extract such stones which will be sharp enough to save us. That is how it started. The first industry, as they call, is mining. So this mining started with this premise in mind. Somebody, they say some lady in Turkey, I don't know how true, she happened to be the first lady who put grain in the fields, and from there on started the agricultural age, and that was a big revolution. From hunter-gatherer stage to now we are producing our own. But coming from the hunter-gatherer phase to this agricultural phase meant that during that interim period, the mankind learned to collaborate. They joined hands together. जो हम लोग बोलते हैं कबीलाई संस्कृति बनी. They joined hands together and then they started living in sort of village near some river so that they have adequate resources to build on their agricultural conquests. This led to the concept of families, and in the families what we were basically doing was, what was that? Supporting each other. See, the 5 important fundamental requirements of human body is what? Roti kapda makan to obvious hai, swasth shiksha. All these things were taken care by the families itself. We did not have any established institutions. तो उससे क्या हुआ? बॉन्डिंग बढ़ी. फैमिलीज से आदमी एडुकेट होता था, फैमिलीज केयर करती थी बीमार होने पे, फैमिलीज बुढ़ापे में ख्याल रखती थी, और कोलैबोरेट करके हम लोग धीरे धीरे पावरफुल बनते गए. ब्लेंडेड विथ आवर नॉलेज, जो कि आदमी का बोलते हैं 2 एबिलिटी है. वन इज योर कॉग्निटिव एबिलिटी एंड अदर इज योर फिजिकल एबिलिटी. In terms of physical ability, you are very weak in comparison to all the other animals. In terms of cognitive ability, you are very strong. So what happened? Due to this superiority in cognitive ability, mankind started ruling the planet. And today, no creature on this earth is able to challenge us. And due to this cognitive ability came industries, and we are all part of that industry. तो fundamental change क्या हुआ इंडस्ट्री आने में, कि जो फैमिली ओरिएंटेड था, एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कल्चर था, फैमिली ओरिएंटेड कल्चर था. Older people like us have been witness to that joint family concept also.
जहाँ घर में अनाज आता था और सब लोग हम लोग उसको देखते थे कैसे हैंडल किया जाता है। सडनली वी केम टू न्यूक्लियर फैमिली। अभी हमारा न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट हो गया, हम दो हमारे दो, इस टाइप का कॉन्सेप्ट आया। नाउ फ्रॉम न्यूक्लियर फैमिली क्यों आया? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ? जो 2-3 चीज फंडामेंटल है, क्या क्या? किसी भी चीज का फंडामेंटल्स क्या है किसी भी टाइम का? एक है, यू कैन कॉल इट टाइम, द अदर इज स्पेस एंड थर्ड इज नॉलेज। टाइम, स्पेस एंड नॉलेज। तो रेलेवेंस ऑफ टाइम जो पहले आपका फैमिली वाले में बिल्कुल फ्लेक्सिबल था, ठीक है, आप 1 घंटा देर से भी खेत में काम करने जाएंगे तो नोबडी विल क्वेश्चन यू। दैट was translated into industry, जहां 1 मिनट आने पे भी लेट यू आर क्वेश्चन। असेंबली लाइन, पूरा का पूरा सिस्टम बैठ जाता है। स्पेस में भी चेंज हुआ। आप पहले का जमाना देखिए, याद कीजिए, व्हेन वी वर यंग, टेलीविजन जब सबसे पहले शुरू हुआ था, दीपेंदु साहब, इट वॉज व्हेन sometime I remember in 1975, first time our Prime Minister unfurled national flag 15 अगस्त को लाल किले पे, and that was telecast live। तुरंत बाद आया कंप्यूटर। कैसे, मतलब उस पीरियड में आप देखिएगा सडनली फिल्म सबका भी जो स्टाइल देखिए, पहले जो फिल्म एंड होता था हैप्पी एंडिंग वाला, उसमें एंटी हीरो सब आने लगा। मार्लन ब्रांडो आपको याद होगा, बाद में शाहरुख खान, ऑल दिस पीपल स्टार्टेड कमिंग इनटू द पिक्चर। और फाइनली क्या हुआ कि एंटी हीरो का भी कॉन्सेप्ट उस पीरियड में जन्म हुआ, और साथ साथ नई टेक्नोलॉजी भी आना शुरू हो गई। अब नई टेक्नोलॉजी आने से एक जो सबसे बड़ा चेंज अगर आप पूछिएगा कि क्या होगा उस पीरियड में, तो दैट वाज कि टाइम डोमेन जो है वो बहुत रिस्ट्रिक्टिव हो गया। मतलब हम लोग बोलते हैं सब कुछ है, टाइम नहीं है, वी आर ऑल हार्ड प्रेस्ड फॉर टाइम। और स्पेस डोमेन बहुत वाइड हो गया, बिकॉज आप पूरा सैटेलाइट पे डिपेंडेंट हो गए। आप कुछ भी आज के डेट में कर रहे हैं, आप एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं, आप सीधे सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप इवन एक सिंपल टास्क कर रहे हैं कि से सिनेमा देखें हम घर में बैठ के नेटफ्लिक्स पे, सैटेलाइट इज कमिंग इनटू पिक्चर। सो यू कैन थिंक ऑफ न्यूमरस एग्जांपल्स। टू कट इट शॉर्ट, व्हाट हैज हैपेंड कि टाइम जो है वो बहुत ही कॉन्स्ट्रेंट हो गया और स्पेस जो है वो बहुत बड़ा हो गया। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल होता है, हम लोग हमेशा सुनते हैं ना, जब CNTV क्या उसको बोलते हैं सर, वो जो बताता है शेयर वगैरह का, CNBC है ना, या जी बिजनेस, क्या बताता है? इस कंपनी का फंडामेंटल्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस कंपनी का फंडामेंटल्स बहुत वीक है, इसको मत खरीदिए। मतलब फॉर मी एंड इवन फॉर फ्यूचरिस्ट लाइक ऑल्विन टॉफलर, these are superficialities। फंडामेंटल 3 ही चीज है, टाइम, स्पेस एंड नॉलेज। these 3 things are fundamental। नॉलेज में सडनली एक बहुत ही बड़ा उछाल आया इस पीरियड में, इंफॉर्मेशन एज आया। अगर आप कोई ऑल्विन टॉफलर पढ़े हैं तो, कोई पढ़ा है ऑल्विन टॉफलर? somebody great। so फ्यूचर शॉक से शुरू होके थर्ड वेव, पावर शिफ्ट, और अभी जो लेटेस्ट उनका चल रहा है रिवॉल्यूशनरी वेल्थ, ऑल दिस लीड्स यू टू बिलीव दैट चेंजेस इस पीरियड में जो हो रहा है वो बहुत रैपिड हो रहा है। अगर आप एग्रीकल्चरल इकोनॉमी समझिए, अगर 10,000 साल पहले शुरू हुआ
तो 10,000 साल से लेके टिल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हम लोग उसी मोड में ऑपरेट किए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद अब जो एज आया जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन एज बोलते हैं, कितना जल्दी आया इसको देखिए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अगर आप मान लीजिए कि ठीक है मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी में आया, तो ये इंफॉर्मेशन एज कब आ गया? मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी आप बोल सकते हैं इजीली, क्योंकि 1960 वगैरह को तो हम लोग बेस मान ही सकते हैं। तो जो चीज पहले 10,000 साल में हुआ उससे बहुत 100-200 साल के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया, और अब जो चेंज आएगा वो और छोटा छोटा स्पैन में आएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अभी का जो जनरेशन है वो हम लोग के टाइम में जो हम लोग जनरेशन गैप बोलते थे 10 साल का होता है, दैट हैज नाउ रिड्यूस टू 2 years। अभी मतलब जो 2000 के बाद पैदा लिया है बच्चा लोग उसको 5 कैटेगरी में ऑलरेडी बांट दिया, अभी 2022 है। तो यू जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि कितना तेजी से सब कुछ बदल रहा है, मतलब चेंजेस, और हम लोग देख भी रहे हैं। वी आर ऑल विटनेस टू इट एज अ जनरेशन। वी आर वेरी लकी टू हैव विटनेस्ड बोथ थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड तो अभी भी हम लोग चल ही रहे हैं जिसमें कंप्यूटर ऑटोमेशन चल रहा है, फोर्थ में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो इसमें जो भी नॉलेज बिट्स है वो बहुत तेजी से आपको थ्रो किया जा रहा है। तीनों फंडामेंटल में मेजर शिफ्ट हो गया। टाइम में क्या हो गया अभी मेजर शिफ्ट इंफॉर्मेशन एज में, कि हम लोग जो फैक्ट्री में अभी तक काम करते रहे हैं 8 to 5, वो आप देख रहे हैं कि हमारे सबके बच्चे वर्क फ्रॉम होम और कोई टाइम का ठिकाना नहीं है। सो टाइम पूरा शिफ्ट कर गया। शुरू हो गया था पायलट से, शुरू हो गया था एयर होस्टेस से, शुरू हो गया था, शुरू पहले ही हो गया था, बट अभी कोविड से और एक्सेलरेट हो गया। तो टाइम का कोई हिसाब किताब नहीं है, टाइम पूरा ही पूरा फैल गया, स्पेस पूरा का पूरा फैल गया, नॉलेज पूरा का पूरा फैल गया। तीनों में तीनों जो फंडामेंटल है, यही 3 फंडामेंटल जो हर जनरेशन के थ्रू चलता है। और आप तीनों जो 3-4 जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, या शुरू कीजिए हंटर गैदरर स्टेज से, या फिर आपका एग्रीकल्चरल टू इंफॉर्मेशन टू दिस व्हाट वी आर कॉलिंग AI and ML based revolution, across this major change अगर किसी एक 3 फंडामेंटल में हुआ है तो इसी में हुआ है। तो राइट नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज कि हम लोगों को सिंक करना पड़ेगा तीनों फंडामेंटल में। हुआ क्या, एक तरफ अगर आप एक रडार लेके बैठिए, मान लीजिए होता है ना जो गाड़ी का स्पीड चेक करने के लिए रडार लेके बैठता है आदमी, तो अगर आप एक रडार लेके बैठिए और मेजर करना शुरू कीजिए डिफरेंट एंटिटी सबको, तो आज के डेट में सबसे तेज कौन सा एंटिटी भाग रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस। बिकॉज नॉलेज को सबसे पहले अडॉप्ट करता है कोई भी बिजनेस, क्योंकि बिजनेस उसमें पॉसिबिलिटी देखता है, और पॉसिबिलिटी देख के वो ये समझने की कोशिश करता है कि इसको हम कैसे अडॉप्ट करके अपना बॉटम लाइन इंप्रूव कर लें। तो कोई भी नई चीज को अडॉप्ट करने वाला सबसे पहला होता है बिजनेस। सो इफ यू हैव अ रडार एंड सिट विद अ रडार, जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम इमेजिन कर रहे हैं, और उस रडार के थ्रू आप गाड़ी को बढ़ते देखिए, तो बिजनेस की गाड़ी आपको सबसे तेज बढ़ते हुए दिखाई देगी, से एट अ स्पीड ऑफ, कुछ अंदाज कर लीजिए 100 किलोमीटर्स पर आवर और सो। सेकेंड में आपका जो स्पीड आएगा वो आप देखेंगे एनजीओस। बिजनेस के बाद जो अर्ली एडॉप्टर्स होता है टेक्नोलॉजीज का, या टाइम स्पेस और नॉलेज इस डोमेन में मेजर चेंज, गेम चेंजर की जो भूमिका निभाता है वो होता है एनजीओ। एनजीओ का कॉन्सेप्ट भी आप सब जानते हैं, इसी सेंचुरी में आया है। इस सेंचुरी में क्या मतलब, आई मीन लास्ट सेंचुरी में, 20th सेंचुरी 1960 वगैरह के आसपास है। तो ये जो एनजीओ का स्पीड है, और फिर
तीसरा जो चीज है वो है नॉलेज। तो नॉलेज वाला गाड़ी को जब देखिएगा, या अच्छा ठीक है, तीसरा में हम फैमिली मान लेते हैं, लेट अस थर्ड एक फैमिली एज द थर्ड एंटिटी। तो फैमिली में क्या हो रहा है फाइनली? आप लोग कनेक्टेड है ना? यस और नो? ठीक है, तो हमको थोड़ा इस बात की चिंता हो जाती है जब इस तरह का। तो फैमिली जो है, फैमिली में क्या होता है कि पहले फैमिली जो सारा कुछ सपोर्ट कर रहा था, वो फैमिली अब अपने लिए सिर्फ जी रहा है। और आज के डेट में हम लोगों का बाल बच्चा तो हम लोग को भी नहीं पूछता है। दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। तो ये फैब्रिक एकदम से टूट रहा है, लेकिन फिर भी फैमिली भी उस रेस में आगे बढ़ते बढ़ते बिखर सा रहा है ना संतोष जी? बिखर रहा है। तो और आगे जाइएगा, उसका स्पीड लेकिन कम है, क्योंकि हम लोग उसको ड्रैग कर रहे हैं पीछे से। हम लोग पीछे से ड्रैग करते हैं। बच्चा लोग बोलता है नहीं नहीं आई नीड टू फ्लाई, हम लोग बोलते हैं नो नो नो, मतलब वो हमेशा द्वंद चलते रहता है। और फिर फोर्थ में जब हम लोग आते हैं, तो सबसे जो हम लोग को डायरेक्टली अफेक्ट करता है वो करता है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट मतलब इस फोरम से बोलना उतना उचित नहीं है, बट गवर्नमेंट या जो भी रेगुलेटरी बॉडीज है, उसका स्पीड जो है, अगर उधर 190, 80, 70 पकड़िए, तो उसका स्पीड 10 किलोमीटर्स पर आवर। तो एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया। मतलब आप चाहते हैं कि हम कुछ करें, बट फिनांस वाले साहब बैठे हुए हैं, ये तुरंत बोलेंगे कि हमारा तो स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है, आई कैन नॉट डू मच अबाउट इट। सो एक सिंक करके, मतलब मेरे कहने का मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव एट इज कि फ्रॉम अ नन एंटिटी ऑन दिस प्लैनेट, the human being has been able to rule this planet primarily because of what? Sync, collaboration. Collaborate करके ही आदमी आगे बढ़ा है। Collective wisdom, ये वो सब, फैमिली, फैब्रिक, सोसाइटी, नेशन, ये सब का कॉन्सेप्ट बिल्ड करके, ये सब फिक्शनल कॉन्सेप्ट है। नेशन का कॉन्सेप्ट, रिलीजन का कॉन्सेप्ट, मनी का कॉन्सेप्ट, ये जितना कॉन्सेप्ट सब दिया सिर्फ किस चीज के बढ़ावा देने के लिए? हम लोग सब एक हैं, हम लोग सब सिंक में चले। इस चीज को बढ़ावा देने के लिए आदमी ये सब इजाद किया। सडनली विथ these emerging and changing technologies, what is happening is that the very sync is getting badly desynchronized. Agreed or not agreed? हम लोग सब मतलब आजकल समझ में नहीं आता है कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। हम लोग एज ग्रुप का जो आदमी लोग यहाँ बैठा है, हमारे एज ग्रुप का तो खैर कोई नहीं है, लेकिन जो भी 2 साल 4 साल 5 साल छोटे लोग हैं, सर हैं थोड़ा थोड़ा मेरे एज ग्रुप के, और मुनि राजू साहब आप भी हैं ना तो ये लोग हैं। बट बाकी लोग को लगता होगा कि सचमुच हमारा जो प्रीडिसेसर है उसके सोचने का तरीका हमको ठीक नहीं लग रहा है। तो ये जो सिंकिंग का प्रॉब्लम हो गया, इससे क्या हुआ? एक तरफ तो नॉलेज बहुत बढ़ रहा है, नॉलेज बढ़ के आसमान पे पहुंच गया। सब लोग, अब हम लोग एक पैरेलल ह्यूमन बीइंग डेवलप कर लिए हैं जिसका नाम है रोबोट। वो हमको एक्सटिंक्ट भी कर सकता है अगर हम लोग उसके कोलैबोरेशन को नहीं रोकें, क्योंकि रोबोट जो है अब कोलैबोरेट भी कर सकता है, और रोबोट सेल्फ लर्निंग भी है, और रोबोट में फिजिकल एनर्जी भी है। तो नाउ वी आर कंपीटिंग अगेंस्ट आवर ओन क्रिएशन, मतलब वी आर बीइंग चैलेंज्ड बाय रोबोट्स। हम लोग अपना ही जो भस्मासुर पैदा कर रहे हैं। तो दिस इज अ ह्यूज चैलेंज, ह्यूज चैलेंज। And the only answer to this challenge is to be aware of what is happening around you, what technologies are hitting you, what is this AI ML all about, what is this AR VR MR is all about, what is metaverse,
अदरवाइज आपका जो, चूंकि आप सिंक आपका छूट जाएगा तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। आप देख लीजिए हर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में एक नया स्ट्राटा का जन्म हुआ है। अर्ली एडॉप्टर ऑफ फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, स्टीम पावर, यूरोप ended up ruling the world. Second industrial revolution, electricity, Europe and America. हम लोग को थर्ड वर्ल्ड बोलना शुरू कर दिया because they were early adopters. We bridged the gap somehow with the third industrial revolution, computer automation, IT. आज के डेट में इंडिया is supposed to be IT powerhouse. Bridged, but still not पूरा गैप बंद नहीं हुआ, still they are ahead. But now they have at least stopped calling us third world countries. And this fourth, which is about data driven decision making. This is nothing but data driven decision making. And how is it going to be possible? Through connectivity. Faster connectivity, faster access to information which you require at any point of time with analytics built in, so that you are able to blend your experience with this data backup and arrive at a very good result. So if we don't do it, our competitors have already started doing it. So we are bound to lose weight. अब इंडिया में क्या हो रहा है, आप देखिए कि इंडिया में जो हमारा मिलेनियल्स है, दे हैव ऑलरेडी अडॉप्टेड इट, एंड दैट्स व्हाई अभी इंडिया भी डेटा साइंटिस्ट के मामले में कम नहीं। पूरे वर्ल्ड में हम लोग, अधिकतर लोग का बच्चा AI ML इसी सब में पढ़ाई कर रहा होगा, क्या गलत बोल रहे हैं? सब लोग वही AI ML इसी मोड में चल रहा है, एवरीबॉडी। सो अगर हम लोग उसके पावर को देखिए, we don't need to be experts, we don't need to be, we can't be, but the only idea is we need to be at least aware of what these technologies are offering, so that as decision makers or as shop floor managers, we are able to implement some of the tools to our advantage. That is the only idea. And this is not just true for industry. See, जो हम खाता खींचे हैं, ये इंडस्ट्री वगैरह तो इस फॉर्म में रहेगा नहीं, वर्ल्ड भी इस फॉर्म में रहेगा नहीं, पैसा भी नहीं रहेगा। हम लोग जिस पैसे के लिए इतना मारामारी कर रहे हैं, पैसा भी नहीं रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी फिनांस वाले साहब बैठे हुए हैं, NFT शुरू हो गया है ना, क्रिप्टो करेंसी, Bitcoins, Ethereum, all these things are now ruling the world. और ये सब ऐसा टेक्नोलॉजी है ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वगैरह, which will shatter the concept of nations and government, because these are independent. It cannot be controlled. This is self-controlled. This is regulatory, because you know, one blockchain का information भर गया, दूसरे blockchain में जाएगा with a tag, और वो सेल्फ कंट्रोल्ड हो जाएगा। अगर कोई आदमी उससे छेड़छाड़ करना चाहेगा, नहीं कर पाएगा, जो कि गवर्नमेंट खूब करती है। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहती है इसको लागू करना? बिकॉज इट इज फॉर देयर डिसएडवांटेज। बट द टेक्नोलॉजी यू नो इज सो पावरफुल, दिस टेक्नोलॉजी, कि वो आपको सेंट्रलाइज्ड डेटा सर्वर से दूर लेके डिसेंट्रलाइज्ड डेटा सर्वर्स में जा रहा है। इसलिए यू आर हैविंग डिफरेंशियल एप्स, DeFi आप सुने होंगे, all those things are now coming into picture. So all said and done, we need to understand what this Web 3.0 has to offer. We need to understand what this technology has to offer. We need to be data literate, digital literate. Data literate means by looking at some data, we must be able to understand what has it for me. What kind of useful information can I derive out of that data set? And the second, which is digital literate, I must be able to use my
टूल्स लाइक मोबाइल्स, हालांकि मोबाइल भी चला जाएगा, हम अभी प्रेडिक्ट कर दे रहे हैं इस मंथ से, मोबाइल ऑल्सो विल नॉट बी देयर, मतलब मेटावर्स वगैरह जो इमर्सिव टेक्नोलॉजीज आ रहा है, थोड़ा दिन में हम लोग सुंदर सुंदर चश्मा लगा के घूमते रहेंगे. सो ऑल दिस थिंग्स क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये सब का समझ और उसको कैसे अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं. डिजिटल लिटरेट बनना है, हमारा DCS है, PLC है, जो भी डिजिटल गैजेट्स हैं जो हमारे हाथ में दिया हुआ है, उसका पावर हम कैसे हार्नेस कर सकते हैं, या उसमें कितना पावर है. इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू नीड टू यूज एवरीथिंग, वो आपके लिए इम्पॉसिबल है, यू कैन नॉट डू इट. बट हमारा एजुकेशन सिस्टम में एक ये मेजर चेंज लाने की जरूरत है कि अब रोट लर्निंग से कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ऑल दिस इज रिडंडेंट. पूरा एजुकेशन सिस्टम मतलब आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी. अभी क्या है, एक्सपीरियंस से लोग सीख रहा है. सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग हैज टू बी स्टार्टेड. सो आपको डिजिटल लिटरेट होना होगा, डेटा लिटरेट होना होगा, और ये समझना पड़ेगा कि जिस इंस्टीट्यूशंस को लेके हम लोग बहुत प्राउडली बात करते हैं, जैसे MTI अभी 60 साल मना रहा है, 60th ईयर, वी आर इनटू 60th ईयर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस. हीरक जयंती हम लोग मना रहे हैं. बट जो फेजेस से गुजरा है MTI, उससे ज्यादा कठिन फेज से आज गुजर रहा है, क्योंकि the kind of challenges that have been posed by these emerging technologies and the emerging times, हमको seriously rethink करना होगा how we work. So the whole idea of this workshop is to sensitize you about the importance of adopting, understanding and using these tools not only in our organization but in our personal life also. So with this premise, I would like to end, because I think I have already overshot my time. So thank you very much for a very patient listening. Thank you.